which will live with us for a very long time. Bismillahirrahmanirrahim. You have joined us today for this. When I have a feeling that is divinely guided, he looks at the situation, it's like they understood. There's a Persian couplet, so they thought of God, then Mughal aesthetics. That's what we mentioned, that don't call it a country. So Mulk mat kaho, usko baad char bhag hai, Surah Rahman mein jo tazkira hai, Jammu ka, wo sari cheezein jo lagi. Came to India and established their rule because mostly after modern. I will continue. So first of all, I want to say it's really wonderful to receive flowers as a landscape architect. It doesn't happen that often, but I'm always struck when it happens, and how good they smell and all of that. And so we are going to talk about gardens and landscape infrastructure, and plants and flowers are part of that. And they are part of the very rich traditions of Kashmir that actually predate, of course, the Mughals. So a few things have been mentioned already about the work that really started in 2010 when I came a first time to Kashmir. I had visited India, I think 2005, early in New Year's 2005 for the first time, and I'd been also to Ladakh, but I didn't come to Kashmir. I had stepped out of my role as head of gardens at the National Trust for Scotland, where we maintain, I still say we, I'm already so many years not there anymore, but at that time we maintained a good number, about 45 very significant historic gardens. And so it was quite a break for me in between jobs, to say it like that, to come to Kashmir and get back to the roots of conservation and research. So before I start, I really want to thank, and I also do that in the book, I want to thank the people of Kashmir. I've been welcomed here. They made me speak up a little bit louder. So first of all, I wish to thank the people of Kashmir. I've been welcomed here, made at home, and I've been coming back, and being from the West, that it can be a shock to be in the environment here. And your environment, of course, I would struggle to come back, but now it's been wonderful. But I also say that because I appreciate very much that I'm permitted to research something that's really your identity. That's what we mentioned, that don't call it a country. So Mulk mat kaho, usko baad char bhag hai, Surah Rahman mein jo tazkira hai, Jammu ka, wo sari cheezein jo lagi. Came to India and established their rule because mostly after modern. Well, it started in 2010 when I came the first time, and we were looking at a few of the more well-known gardens. And what we realized, and I was together with the colleagues, is that there's a need of investigating the landscape architectural components of the gardens. And so I started slowly to help with that, and that became, without
realizing it, it became kind of a main research area in my career with this book as an outcome. So, at a time when Kashmir is witnessing a huge urbanization, how can we protect our Mughal gardens and the architecture's landscape over here? Well, first thing, and that's not only the case for the Mughal gardens, because I advocate and champion all types of green spaces. So even ancient landscapes, pre-Mughal, pre-Islam in the valley, and so are very important. But first of all, I think we need to understand what we have. So a lot of people don't really know the significance of some places. I was recently in Zehanpura, where 3 stupas exist, and they'd been there for so long, thousands of years, almost, about just under 2,000 years probably. And they've been there, but people didn't realize they were stupas, or just kind of ignored it, and engineers created canals cutting through the Buddhist site. And so we need to first of all understand the significance of those sites, and then integrate that in our kind of future living environments. First of all, of course, read and study some things. And then secondly, I would really say, think about place, about nature. Where are you? How do you look after your environment? And we all, if everybody would look after it, it would really be safeguarded better and maintained. And that's something we have to learn from young age. देखिए, ये किताब जो है ये कश्मीर के मुग़ल बागात के बारे में है। मुग़ल बागात हिस्टोरिक गार्डन्स हैं, ये इस्लामिक गार्डन्स हैं, और ये दुनिया में कल्चरल लैंडस्केप्स में, ख़ासकर नेचुरल हेरिटेज में एक बहुत मोतबर और मुस्तनद तारीख़ जिन बागों की है और इनकी तारीख़ी अहमियत जो है वो उजागर करती है। अब मुग़ल बागात यहाँ भी हैं, बड़े सग़ीर में बाकी जगहों पर भी हैं, मगर हर इलाके की एक ख़ास पहचान होती है और ख़ास कैरेक्टरिस्ट होता है। कश्मीर में भी अपनी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक, जैसे दिल्ली में आप वो पहाड़ नहीं ला पाएंगे ना, ज़बरवन डल लेक नहीं ला पाएंगे, वहाँ भी मुग़ल गार्डन्स है, यहाँ भी हैं। ये जो इम्तिज़ाज है पानी का, दरिया का, पहाड़ का, टेरेसेस का, इनमें जो खूबसूरती है ये कश्मीर को एक मुनफरद हैसियत दे देती है, एक इम्पॉर्टेंट हैसियत दे देती है। अब इनके प्रेशर्स हैं, हिस्टोरिसिटी कैसे मेंटेन करें, बाग को बहसियत बाग कैसे रखें, बहसियत एक तारीख़ी असासा कैसे रखें, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत स्कॉलरली सोच चाहिए, स्कॉलरली थाट चाहिए, स्कॉलरली इंटरवेंशन चाहिए, स्कॉलरली एग्जामिनेशन चाहिए। कश्मीर के मुग़ल बागात के बारे में आज तक लिखा गया, बहुत लिखा गया, वो लिखा गया सारे बागात के बारे में, उसमें कश्मीर के बाग भी। ये पहली एक कोशिश है या एक एक्ट है जिसमें सिर्फ कश्मीरी मुग़ल बागात पर दुनिया की इनफैक्ट रिसर्च के हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिल कहते हैं, पब्लिशर्स को। इनकी किताबें बहुत कीमती होती हैं मगर वो मेहनत भी करते हैं। तो ये किताब 7 साल के मुसलसल एग्जामिनेशन, विजिट्स, एक एक चीज़ देखने के बाद, रिसर्च के बाद ऐसी किताबें बनती है। तो एक बड़ी खुशाइंद बात है, ये पहली किताब है जो कश्मीर पर आई है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों को तो पता चलेगा ये बाग क्या है, और ये जो प्लानर हैं यहाँ, जो उनकी ज़िम्मेवारियाँ हैं, जिनके ओहदे इसलिए हैं कि इन बागात को मेंटेन कर पाएँ, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन बुक बन जाता है। तो ये एक आइडेंटिटी और डिग्निटी का मामला भी है कि आपके एरिया में ऐसा बाग है, ये आपको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी देता है। तो हमारे लिए, ख़ासकर कश्मीर के लिए, एक बहुत अहम किताब होगी, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कश्मीर को जैसे खुदा का तोहफ़ा समझते हैं। क्योंकि ये हमने भी सुना कि पहली बार कश्मीर के गार्डन्स पे एक एक्सक्लूसिव बुक लिखी गई है, तो और फिर हमें पता चला कि इंटैक के सलीम बेग साहब ये जानने वाले हैं ऑथर इनके, क्योंकि इंटैक के साथ भी इन्होंने काम किया, तो हमने इनको इनवाइट किया था इन कोलैबोरेशन विद इंटैक। तो काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन इन्होंने दी और एक एक करके इन्होंने बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दीज हेरिटेज साइट्स इज़। अर्बनाइजेशन भी ठीक है, लेकिन इनको प्रिजर्व करना बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और
اس میں سوسائٹی کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے، جس پہ جو مینیجنگ کمیٹی ہے امر سنگھ کلب کی، ہم تقریباً 1-1.5 سال سے اس پہ اسٹریس کر رہے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، ان کو یونائٹ ہو کے ہر ایک سائڈ پہ یہ دیکھنا ہے کہ چاہے انوائرمنٹل ہو، ہیریٹیج ہو، کلچر کو اپنے بچانا ہو، پرزرو کرنا ہو، تو اس سمت میں یہ قدم تھا چھوٹا سا ہماری کلب کی طرف سے.